बताइए आप में से yeah पहले I want to know how many of you have actually solved this problem before. Container with most water. Has anyone solved this before? No, sir. Okay, no problem. All right then, we'll start. Container with most water. Okay, so you're given an integer array height of length n. There are n vertical lines drawn such that the two endpoints of ith line are I0 and I of height I. So the total vertical lines that you have are n, okay? And the two endpoints of an ith line would mean that let's say if you are given an array and you have 1, 2, 3, 4. The name of the array is height, and these are all the heights, all the different heights, okay? Or you can call them as height bars. So you're given an integer array named height of length n. The total length is n. N means the total number of items inside the array. 1, 2, 3, 4. So the n will be equal to 4. And then there are n vertical lines. These are all vertical lines, okay? Representing the heights. Or these numbers are representing vertical lines depicting heights, okay? Vertical line drawn such that two endpoints of ith line are I0 and I of height I, okay? So if I'm iterating over this array, if my I lands here, how can I use this to represent a height bar? Easiest way to understand this is, if you can see here, if my I lands on here, this is 8, okay? If I have an array where I have 8 somewhere, and my I has landed here, okay? So the I will get you two different values. I will give you two different dimensions. Of course, x-axis and y-axis. Okay, it's easy to represent that way. But two things. One is the height of I, which is the 8. Okay, the number itself will be 8. And I0, which is along the x-axis. And this is telling you where the other endpoint of that height is. So if someone is telling you, for example, let's say, easy example. This is a hill, and standing upon it is Jill. Okay, this is a hill, and standing upon it is Jill, and Jack is standing on the bottom of that mountain. If Jack can see the height, and Jill can shout, "I am 100 feet. I'm at the height of 100 feet, or I'm 100 feet high from you," then Jack will measure the height and make sure that is the 100 feet by standing at the base, which will be 0. So from 0 to 100 makes sense. Okay? So can I say, if a person coming on a plane, wants to know how high is the Jill standing, it needs to know where the Jack is, and then it can measure where the Jill is standing. Because I think in this direction, it can only tell the forward distance. But for height, it needs to know where the Jack is standing, right? So Jack and Jill are twins, and they can be represented with I. So I of 0 is this edge, and Jill is standing here. Okay, so I of 8 is the height, or I of height I, and I of 0 will represent where the Jack is. So Jacks and Jills are going across all these bars. Okay. Now, what if
Jack and Jill are enemies. This is Jill and this is Jack. And what Jack wants is Jill knows how to swim, but what Jack wants is Jack wants to drown the Jill. Okay. So if Jack wants to drown Jill and Jill knows how to swim, so Jack needs to make sure that he traps Jill into the most amount of water contained by bars so high that Jill cannot get out. Or he at least wants to do his best to drown the Jill. Okay? And that will summarize your entire question. And once you read the question, you'll understand this. Keep this example in mind. So one thing is that if Jack has bars of different heights, and he needs two bars, for example, A and B, high enough, so it can drown Jill. But what if Jill can cover the height? Then in that case, he can find a smaller bar and increase the distance. And in that case, he can put in more water, and he can drown Jill as well. But of course, Jill can conquer the height if she can. But what his goal is to put as much water as he can inside, contained by two bars, just to drown Jill, right? So what he can do is start with a small bar, contain Jill in a small bar, and then put a much bigger bar, and then more water, and then more water. And the more water Jill pushes down, the more water he puts in, and that's how she gets trapped. Now, I might have made a wrong analogy somewhere because this does not exactly represent the situation. But as you read, it'll be easier for you to understand what our approach is. So now I hope you understand the first part. The second part is find two lines together with x-axis that form a container such that the container contains most water. So you're given bars in form of an array. You need to find two bars that if you put them opposite to each other, they'll contain the most amount of water. Okay? They'll contain the most amount of water. Okay. Return maximum amount of water the container can store. That's all we need to find. Okay. So what you're doing is you are containing water and you're trying to find, if you're given multiple bars, how can you, which two bars you should use and at what distance, so you can form a container that contains most amount of water and do your best with drowning Jill. Okay. So if this is an input array that you've been given height, then in that case, these are your height bars. Okay. All right. So if you see in this example, they're saying that the maximum amount of water that can be contained is 49. And the only way I can get 49 is 7 by 7. Okay. If I'm forming a rectangle, I am doing the length into height or width. I think it's a container, so it's going to be length into height. But there's no other 7. I cannot, of course, multiply two sides, but two opposite sides, if I multiply, then I can get a rectangle in the form of a container. Now, keep in mind, it cannot be a trapezoid. I think that's the other shape that's like a little bit oblique. But here they're saying you may not slant the container. You cannot have a container like this, right? You cannot have a container like this. The maximum water that can be contained without spilling, it's only this area. Because if you try to overfill it,
It's going to be slant, it's going to flow down. Okay, so what you need to find is, you need to find those two bars that can contain most amount of water. Okay, now where did this 49 come from? This came from this being 7. If you trace it here, this being 7, okay? And since we're containing between height 8, this one is 8, and this one is 7, right? Remember, we multiply the height multiplied by the distance or the length. So what is the difference between 8 and 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, right? So it's the distance, the indices you have to cover in order for you to get to 7. It's 7, right? And this height is 7. And this gives you the area. Is that the most amount of area? That's something we have to determine greedily. We have to keep comparing different areas. And finally, when we, or the parameters that give us the area. And finally, when we get at the best area, that's the best area that it can find. Okay? That's in, that will be the area where you can fill with most amount of water. Okay. So the question is, why are we choosing 8 over 1, where the distance between 1 and 7 is the most? Well, we're trying to calculate area, and we need to combine the heights, multiply heights with the distance, and as soon as we find the best height, we start increasing our distance. If we find a better height, we move our height to the next best height, but we have the best other height we have is 8 again. So we don't have any better height. So we don't need to actually move this. In fact, we can keep checking. If we find a better height, we can move forward. But here's another catch. We can have a better height, but with smaller distance, we'll still get the, with the smaller distance, we don't get like a good area. Now, why 8 with 7? Why not 8 with 8? Even though these two are really, because we're never going to multiply 8 by 8, we're going to multiply 8 by the distance. So the distance between 8 and 7 is more than distance between 8 and 8. Therefore, we don't advance. We want to get in most amount of water by calculating most amount of area, and most amount of area will come with the better and better product. And once we hit the best product and we have explored the entire array, then we have found our final answer. Okay, so should I start comparing 2 and 2, and whenever I find a better height, I move forward? Well, let's explore that first, and then I'll tell you the two-pointer approach that we can take to calculate the best maximum area. So in this case, if my I starts here and my J starts here, this doesn't give me the a good idea of the water that can be contained. Here, of course, J is greater than I, so I move to the next J, right? Next J. This is the best maximum. I keep moving J. I explore J. I don't have any better J left anymore. Okay. So then I move my I. Okay. And then I calculate this, and I can keep moving my J. Do I find a better? This can be done, but a better approach would be to put a pointer here, put a pointer here, and keep closing the distance between these two pointers until they arrive at a index where they're not crossing each other, meaning um, you can keep exploring this array until this end, where these two don't cross each other. Okay. The best way to build an area is determine the best height and then keep increasing the distance. If this is the best distance that you can find, then good. If not, you can keep increasing the distance. If you find a better height, take that height, okay, and keep looking for a better distance and keep multiplying.
Okay. So I'm going to iterate from the right pointer. I'm going to take the left pointer. Okay. If I am finding a better height, I move to the better height. Is this height better? No, it's not. Is this height better? No, it's not. It's not. It's not. Okay. On the right side, I look for a better distance. So in that case, I can move right now, my right pointer is this. I Let me calculate this, what you call it, this area. Right now, the area is 49. Uh, I need 7 times 7. Yes, right now it's 49. Okay, because we need to calculate what we have here. One we can take with the, because the smallest one will determine how much water can we hold. If we go over this one, we'll start spilling. Okay, we cannot do it like this. We cannot fill a container like this. It literally starts flowing down. So what we do is we take the smaller of the two, which is 7. That will be the best height I can get. And then the rest I can just take as distance. This will not even matter. So 7 times 7 is 49. Now I look for a better height versus better distance. Is this a better height? No, it's not. Okay. So if I choose this, then I'm going down again. Then I go to the better height. Now I have a better height, right? Because 8 is better than 7, which is smaller distance. But in this case, what I've done to myself, I've reduced the distance. So 8 times, now the only difference is 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So 8 times 5 is 40. 49 is better than 40. So we're getting a much larger area multiplying 7 by 7 instead of multiplying 8 by 5. So the height will not matter when the distance is giving you more product. Okay. And same can be said for height. If the height is giving you more and distance is giving you less, then you need to choose the height or distance. Okay. So it all comes down to what your product is. Okay. So you will keep going greedily based upon the product you get. Okay. Why start here and here is this will make sure we are not, I think in my opinion, this will make sure we are not repeating the same lines and we're just reducing and trying to find the best maximum until we just keep getting reduced product further and further. So this is how we're going to do this. We start with the right pointer, left pointer, okay, and take the index, go further, and the index will tell us the distance, and the numbers, they will tell us the height. So take the smaller height, multiply by the distance, 7 multiplied by the index, the total difference of the index. If this product keeps decreasing, well, try to keep the one that you originally got. And same do for this one. If you find 9, then you can choose that. Granted, it's giving you a better product. Okay. So that's how we're going to move our left and right pointers until either they're crossing each other, which I think that's what we have to do. So you have to stop at this point where they don't cross each other. So this is the solution for containing the most water. Now I don't have the code part, but please feel free to go ahead and point out anything that you might have found wrong with my logic or give any suggestions. If you wish, I have a GPT generated code. We can go over it and try to understand it. But the code that I generated and ran, it worked with exactly these steps. And I was able to finish it in OFN. So yeah, over to you guys. जी हाँ सरसद मैं आमना
सुनो बशीर। Anything from you guys? Hello, am I audible? Hello, Well, yes, sir, about you. yeah. सरसद आप कुछ इनपुट देंगे इस क्वेश्चन के मुतालिक? सर, एक मिनट। ये सर यही है कि मतलब कि इसको मल्टीप्लाई करना है और उनको उस पर आना है कि 49 पे आना है। जैसे कि अगर हम एक मतलब कि मल्टीप्लाई होता है मतलब कि 1 से मल्टीप्लाई होगा 8 से, 8 से मल्टीप्लाई होगा 6 से, तो फिर अगर जहाँ पर 49 आता है तो उसका जो आउटपुट है वही होगा। क्योंकि देखें, अगर हम इस पे ये देखते हैं कि इसकी जो वाटर लाइन देखते हैं, वाटर लाइन हमारी जो है वो 7 पर आ रही है और 7 से लेकर जो जा रही है वो लास्ट तक जा रही है। मतलब कि वन, पहली वाली तो है ही नहीं, पहली वाली तो 1 पर जा रही है। तो जो हमारी लास्ट है सेकंड वाली है, उससे अगर हम जगह मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि 1 हमारी वैल्यू है तो 1 को हम काउंट नहीं करेंगे। जैसे कि हम 8 से काउंट करते हैं, देखें 8 पे जा रही है रेड लाइन, और 8 की जो 7 पॉइंट है उससे हम कर रहे हैं। 7 पॉइंट कहाँ पर आ रहा है? लास्ट में आ रहा है। ये जो ना रो में है, हाइट की रो में, लास्ट में 7 आ रहा है। सही है। बिल्कुल। अब इसमें हम ये देख रहे हैं कि जो पॉइंट है ना वो यहाँ से लेकर लास्ट वाले पॉइंट पे जाए, तो लास्ट वाला पॉइंट भी वही 7 ही है। तो रो बिल्कुल ही मतलब के ना सीक्वेंस में है। तो इसमें यही है कि मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके ही हमें इसको 49 तक लेकर आना चाहिए। नीचे लिखा हुआ एक्सप्लेनेशन में, द अबव वर्टिकल लाइंस आर रिप्रेजेंटेड बाय एरे। एरे जो है हमारे पास 186254837। इन दिस केस द मैक्स एरिया, मैक्स बड़ी बड़ी जो एरिया है, बड़ा जो एरिया है ऑफ वाटर, वाटर है वो, तो उसमें ब्लू सेक्शन द कंटेनर कैन कंटेन इज 49। तो जो ब्लू सेक्शन है वो कंटेन कर रहा है 49 में, तो हमारे पास 49 नहीं है, तो इसलिए हमें इंडेक्स की वैल्यू को लेकर हमें 49 पर लेकर आना है, तो उसका जो आउटपुट होगा 49 होगा। जी, सही है, थैंक यू। और इस पे देखें कि एग्जाम्पल नंबर 2 में देखें, एग्जाम्पल नंबर 2 में लिखा है हाइट 1, 1, तो हमारे पास जो हाइट है 1 है। ये देखिए ना, पहली वाली जो रो है ग्राफ में, पहली वाली जो रो है वो बिल्कुल 1 पर है, छोटे। तो अब 1, 1, 1, 1 करेंगे तो हमारे पास कोई है ही नहीं। मतलब तो हमारा जो आउटपुट है हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इंडेक्स की वैल्यू को। तो इसलिए हमने 1 मल्टीप्लाई 1 करते हैं तो क्या आता है? 1 ही आता है। सही है। तो 1 हम्म। मल्टीप्लाई 1 किया तो हमारे पास आउटपुट क्या है? 1 है। राइट, बिल्कुल। हम्म। मेरे को 1 मल्टीप्लाई पे 0 तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमें डिस्टेंस में एटलीस्ट एक इटरेशन आगे जाना चाहिए, हम्म। तभी हमारे पास वो डिस्टेंस आएगा। तो इस केस में हमारे पास ये वाला 1 0 पे है और ये 1 है। 1 - 0 = 1। हम्म। अगर आप इसको नेगेटिव हटा दें, और 1 × 1 विल बी इक्वल टू मैक्सिमम एरिया विच इज 1। और इस केस में हमने यही किया है कि हमने सबसे पहले एक को मैक्सिमम हाइट हमने कंसिडर किया, और फिर ढूंढा कि हमारे पास इससे बेटर है, उस पर आके हम रुके कुछ वक्त के लिए। और दूसरी तरफ से हमने ये देखना शुरू किया 7 से, कि सबसे पहले हमारे पास बेटर एरिया कितना आ रहा है। तो उसको हमने पहला बेटर एरिया हमने कंसिडर कर लिया, ठीक है, जो भी XYZ हमारे पास आया। अब हमने क्या करना है, हमने डिस्टेंस को शॉर्ट करना है, और देखेंगे क्या हमारे पास 7 से बड़ा कोई नंबर है जो हमें इससे बेटर एरिया दे सकता है। अगर दे सकता है तो ठीक है, नहीं दे सकता है तो हम आगे चलते, हम फिर इसको आगे ढूंढेंगे कि हमारे पास लेफ्ट साइड पे कोई बेटर है, नहीं है, यहाँ भी नहीं है। और आई थिंक इनको हमने 7 को अगर हम मूव करते हैं 3 पे 8 पे आके, तो हमें एक बेटर मिल गया है। अच्छा, हाँ, आई थिंक वी शुड मूव दिस पैरेलल। अगर हम इसको 1 बाय 1 मूव करें, राइट, तो फिर ये हो सकता है कि ये दोनों एक पॉइंट पे आके ये आपस में मिल जाएंगे 1 1 इटरेशन के साथ। ठीक है। और हमने तमाम के तमाम एरियाज को डिस्टेंस हम रिड्यूस कर रहे हैं 1 बाय 1। ठीक है। और इसका डिस्टेंस हम इंक्रीज कर रहे हैं।
हमें हमारी हाइट जो है तो वैसी ही रहे, डिस्टेंस हम यहाँ पे रिड्यूस कर रहे हैं, डिस्टेंस यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है। और हाँ, तो दोनों तरफ से हम एक तरीके से इसको एक तरफ से डिस्टेंस को डिक्रीज कर रहे हैं, एक तरफ से नहीं, डिस्टेंस डिक्रीज ही हो रहा है दोनों तरफ से। अच्छा, तो हमने सबसे पहले सबसे ज्यादा डिस्टेंस लिया। ठीक है। और ये हमारे पास बेस्ट डिस्टेंस है फिलहाल। अब हमने कंपेयर ये करना है कि जो हमारे पास बेस्ट डिस्टेंस है, क्या उसके मुकाबले में हमें कोई ऐसी बेटर हाइट्स मिल सकती हैं कि वो डिस्टेंस को क्या वो हमें इसके काबिल कर दें कि हम डिस्टेंस को इग्नोर ही कर दें। ठीक है। क्या एरिया हमारे पास एक वर्टिकल एरिया वर्स सॉरी एक हॉरिजॉन्टल एरिया वर्सेस अ वर्टिकल एरिया विच इज द हाइट, इन दोनों में हमें जो बेटर मिलेगा तो उसको हम स्टोर कर लेंगे। तो सो वी हैव टू स्टार्ट समवेयर, या तो हम बेस्ट हाइट्स को फाइंड करें फिर डिस्टेंस को हम एक्सप्लोर करें। लेकिन सबसे इजी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में हमारे पास यही रहा कि एंड पॉइंट्स पे हमने लगा दिए दो पॉइंटर्स, इसको बेस्ट डिस्टेंस हमने करार दिया, और फिर बेस्ट डिस्टेंस को डिफीट करने के लिए हमने बेटर हाइट्स की तलाश शुरू की। लेकिन हमें बेटर हाइट्स नहीं मिली, तो इस केस में तो हम यहीं पर रह गए। अगर बेटर हाइट्स मिलती, यहाँ मेरे पास 100 होता। ठीक है। तो उस केस में मैं 7 को डिस्कार्ड कर देता, क्योंकि दिस 100 विल डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज, नॉट कॉम्प्रोमाइज, विल डिफीट द आइडिया ऑफ डिस्टेंस, क्योंकि हमारे पास लेंथ इनटू हाइट हम कर रहे हैं। ऐसा ही है। यस सर। चलिए मैं जीपीटी से देख देख के कोड इम्प्लीमेंट करता हूँ, उसको समझ लेंगे एटलीस्ट, फिर अपने एंड पे हम उसको अनदर टाइम वी कैन इम्प्लीमेंट इट। लेकिन लेट्स ट्राई टू मेक मोस्ट आउट ऑफ दिस। असल में इससे पहले जो क्वेश्चन करना चाहिए था वो मैक्सिमम प्रोडक्ट वाला था, उसको मैं पोस्टपोन करता रहा हूँ क्योंकि उसमें मैंने एक बहुत ही डिफिकल्ट अप्रोच यूज़ की, जैसे मेरे पास बैक ट्रैकिंग भी है, एक्सक्यूज मी, रिकर्जन भी है, बैक ट्रैकिंग भी है, और पता नहीं क्या क्या है। और उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए, ओपन के लिए मैंने मल्टीपल चीज़ों को यूज़ किया। तो दैट्स समथिंग वी शुड हैव डन फर्स्ट। तो उसका जो अल्टरनेटिव है वो काडेंस है। बट एनीवेज लेट्स मूव ऑन विद इट। अच्छा, तो पहले तो एक लेफ्ट पॉइंटर को हम इंट्रोड्यूस करा देते हैं इक्वल टू 0। ठीक है। फिर हम राइट पॉइंटर को इंट्रोड्यूस कराते हैं। ठीक है। अब राइट पॉइंटर जो है हमारा यहाँ पे, तो वही लेंथ ऑफ अरे -1 हो जाएगा। तो हम कहेंगे हाइट जो कि हमारे पास अरे है डॉट लेंथ -1। ठीक है। और फिर एक मैक्सिमम एरिया को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है। ये तब यूज होगा कि जब हम एक मैथ डॉट मैक्स और मैथ डॉट मिन को कंपेयर करके जो चीज़ हमने स्टोर करनी होगी वो यहाँ पे करेंगे। ये मल्टीप्लिकेशन के लिए नहीं यूज होगा, इसलिए इसको 0 से इनिशियलाइज किया। ठीक है। और फिर हमने चीज़ ये देखनी है कि लेफ्ट और राइट को एक इंडेक्स पे नहीं आना चाहिए। ठीक है। तो जब तक हमारे पास डिफरेंस जो है एक राइट का और लेफ्ट का जो डिफरेंस है, जब तक 1 से ग्रेटर है, ठीक है, और जब 1 हो जाता है तब हमारे पास रुक जाना चाहिए, जब उनका डिफरेंस, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है इंडेक्स का, 1 है ना। ठीक है। इंडेक्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो जब तक उससे ग्रेटर है, 2 है, ठीक है, चलते जाओ। अगर 1 हो गया तब रुक जाओ। और यहाँ पे फिर उसके बाद हमने मिनिमम हाइट, जैसे मैंने कहा था कि हम मिनिमम हाइट को कंसिडर करेंगे, क्योंकि हम वाटर को स्लैंट नहीं कर सकते, वरना वो नीचे बहना शुरू हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे हम एक मिनिमम हाइट को इंट्रोड्यूस कराया हमने। ठीक है। और जो हमें दो कोई भी हाइट्स मिलती हैं उनके अंदर से मिनिमम वाले को हमने स्टोर कर देना है। ठीक है। तो हाइट जो कि लेफ्ट पे है, ठीक है, और वो हाइट जो कि राइट पे है, ठीक है, उन दोनों में से हमने मिनिमम हाइट को स्टोर कर देना है। ठीक है। उसके बाद जो हमने डिस्टेंस को कैलकुलेट करना था, तो उसको हम विड्थ क्या देते हैं। ठीक है। राइट से हम लेफ्ट को माइनस करते हैं। ठीक है, क्योंकि राइट वाला आपके पास बड़ा इंडेक्स है, लेफ्ट छोटा ही होगा निस्बतन, तो आपके पास नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए।
उसके लिए हमने ऐसा किया, वरना फिर आई थिंक मॉड्यूलस फंक्शन लगता है। और इसी के साथ ही हमने एरिया को कैलकुलेट करना है। मिनिमम हाइट, ठीक है, मिनिमम हाइट के साथ हमने किसको मल्टीप्लाई करना है, विड्थ को, जो कि हमारा डिस्टेंस है। मिनिमम हाइट 7 और इतना कितना डिफरेंस है, 7 है ये, ठीक है। विड्थ को हमने यहाँ पे राइट माइनस लेफ्ट किया, राइट पॉइंटर हमारा यहाँ पे, लेफ्ट यहाँ पे है, उनको हमने माइनस करके आंसर निकाला, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने देखा कि उनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास करंट मैक्स एरिया कितना है। करंट मैक्स एरिया हमारे पास होगा मैथ डॉट मैक्स, ठीक है। अब मिनिमम की बात नहीं करिए, अब एरिया की बात करें तो जाहिर बात है वहां पे हमने मैक्स एरिया स्टोर करना है। तो मैक्स एरिया को हम न्यूली कैलकुलेटेड एरिया के साथ कंपेयर करेंगे, और जो एरिया हमारे पास बेटर होगा वो मैक्स एरिया के तौर पे स्टोर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या देखना है, अगर हमारे पास जब एक मरतबा एरिया कैलकुलेट हो गया, तो अगर लेफ्ट की जो हाइट है अगर वो राइट से कम है, ठीक है, तो इस केस में हमारा लेफ्ट पॉइंटर मूव करना चाहिए बेटर हाइट के लिए, ठीक है। प्रोडक्ट हमने स्टोर कर लिया ऑलरेडी, वो तो नहीं लूज होने वाला, तो हमें कोई उसका खतरा नहीं है कि वो लूज हो गया तब हम क्या करेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट को राइट से कंपेयर किया हमने, ठीक है। और अगर हमारे पास लेफ्ट छोटा है राइट से, तो हमने करंट लेफ्ट को करंट लेफ्ट को हमने हाइट डॉट लेफ्ट में स्टोर किया, ठीक है। और फिर उसके बाद जब तक हमारे पास लेफ्ट राइट से छोटा है और हाइट ऑफ लेफ्ट जो है, जो कि इसकी वैल्यू है वो करंट लेफ्ट से इक्वल है या कम है, लेफ्ट प्लस प्लस, सो इफ लेफ्ट इज लेस देन राइट, ठीक है। पहली कंडीशन तो हमें ये देखनी है कि लेफ्ट और राइट जो है वो आपस में मैच एक इंडेक्स पे नहीं आ रहा है, ठीक है। और इसके साथ हमें ये देखना है कि आपकी जो करंट हाइट है वो करंट लेफ्ट से अ, जब तक कम है या उसकी इक्वल है। ओके, ये आपकी हाइट डॉट लेफ्ट हुई, करंट हाइट इज लेस देन करंट लेफ्ट। Let me write this down so you guys can also see. It's less than or equal to current left. So in that case we move our left. हमारा जो करंट लेफ्ट है is equal to, if my current left जो कि अब राइट से छोटा हो चुका है, उसकी जो हाइट है, सो करंट हाइट होना चाहिए उसको, करंट हाइट, let's see, while left is less than right and height of left is less than or equal to current left. ओके, तो इसमें ये कहा जा रहा है जब तक मेरा लेफ्ट और राइट आपस में एक इंडेक्स में नहीं, लेफ्ट हमारे पास छोटा है राइट से, ठीक है। यानी कि अगर मेरे पास ये वाला है जो कि इससे कम है, ठीक है, इससे बड़ा नहीं है, तो एक तो ये चीज़ हमें देखनी है। अच्छा, लेफ्ट एंड राइट पॉइंटर की बात हो रही है, सो जब तक मेरे पास ये दोनों इंडेक्स, दोनों पॉइंटर सेम इंडेक्स पे नहीं आए, और जब तक मेरे पास जो हाइट ऑफ लेफ्ट है, ठीक है, अभी मेरे पास ये वाली जो हाइट ऑफ लेफ्ट है वो करंट लेफ्ट से छोटी है, करंट लेफ्ट मेरा ये है, ठीक है, करंट लेफ्ट मेरा ये है। अब जब मैं इसको मूव करूंगा तो हाइट ऑफ लेफ्ट इज लेस, ठीक है, तो मैं अपने लेफ्ट पॉइंटर को मूव करता जाऊंगा इन सर्च ऑफ बेटर लेफ्ट, ठीक है। ये वाला इससे बड़ा है, तो मैं इस पे आके क्यों रुकूंगा, मुझे तो एक बड़ा या मुझे सेम चाहिए। तो अगर दोबारा हिट आ गया तो यहाँ पे मैं रुक सकता हूँ,
लेकिन अब क्या ये वाला और ये वाला जो राइट है, इनके दरमियान डिस्टेंस कम हुआ, तो अगेन मेरे मुझे कोई अच्छा प्रोडक्ट नहीं मिला। ठीक है, तो मैं लेफ्ट को मूव कर सकता हूँ जब मुझे बेटर राइट मिले। ठीक है। अच्छा, अगर मेरे पास ये कंडीशन तो नहीं है। अगर मेरे पास लेफ्ट जो है तो राइट से बड़ा है, जैसे कि इस केस में 8 बड़ा है 7 से, उस केस में मुझे क्या करना चाहिए? उस केस में मुझे इंटीजर सेम लॉजिक अप्लाई करना है जैसे मैंने लेफ्ट के लिए किया है। करंट राइट इज इक्वल टू हाइट ऑफ राइट। करंट राइट की मैंने हाइट स्टोर की। ठीक है, और मैं राइट को मूव करूंगा माइनस के हिसाब से। ठीक है, तो राइट माइनस माइनस। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगेन मुझे कंडीशन लगानी चाहिए क्योंकि लेफ्ट और राइट मेरा मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको लेफ्ट इज लेस देन राइट, वो कंडीशन ठीक है। राइट एंड राइट ऑफ हाइट इज लेस देन द करंट राइट। हाँ, अगर मुझे बेटर हाइट मिली है तो एंड हाइट ऑफ राइट इज लेस देन और इक्वल टू करंट राइट। तो मैं राइट पॉइंटर को तब तक मूव करूंगा जब तक मेरे पास हाइट कम है। जब मिल गई, बड़ी हाइट मिल गई है, उसकी सेम, मुझे इधर एक और 7 मिल गया तो मैं उसको इग्नोर करूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी 7 को एक्सप्लोर कर चुका हूँ, 7 के साथ जो डिस्टेंस है। लेकिन मुझे 7 से बेटर अगर मुझे 100 मिल जाता है तो वहां पे आके मुझे अपने राइट पॉइंटर को रोकना है। तो ये दोनों तब तक मूव करते हैं जब तक इन्हें कोई बेटर हाइट नहीं मिल जाती। और जब बेटर हाइट मिलती है तो हम फिर बेटर डिस्टेंस के साथ न्यू डिस्टेंस मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या इस डिस्टेंस पे न्यू हाइट आपको बेटर प्रोडक्ट दे रही है या पिछले वाले डिस्टेंस, ज़्यादा डिस्टेंस पे कम हाइट आपको ज़्यादा फायदा दे रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे उस हिसाब से आपने इसको देखना है। ठीक है, और इसके बाद फिर हमने ये चेक करना है कि अगर आपके पास कहीं पर राइट, तो ये तो हो गया। ठीक है, अगर मेरे पास कहीं पे ये पॉइंटर आपस में मिल गए, लेफ्ट और राइट, जहाँ मेरे पास जो राइट है इज ग्रेटर देन लेफ्ट, राइट इज ग्रेटर देन लेफ्ट, इफ दे आर जस्ट वन स्टेप अपार्ट वी डू वन फाइनल चेक। और उस केस में हमें क्या करना चाहिए? मिनिमम हाइट इज इक्वल टू, दोबारा से हमने, जब वो दोनों आपस में नेक्स्ट टू ईच अदर आ जाए तो उस केस में हमने लेफ्ट की हाइट, ठीक है, टोटल लगता है हमारे पास 4 मिनट ही रह गए हैं, और हाइट ऑफ द राइट, ठीक है, हाइट ऑफ द राइट इंटीजर विड्थ इज इक्वल टू राइट माइनस लेफ्ट। दोबारा से हमने डिस्टेंस उसका कैलकुलेट किया। ठीक है, दोबारा से हमने उसका एरिया चेक किया। ठीक है, मिनिमम हाइट मल्टीप्लाई बाय विड्थ, और फिर मैक्स एरिया इज इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स, मैक्स एरिया और एरिया के साथ कंपेयर करना है, न्यू एरिया जो इवेल्युएट आप कर रहे हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद आपने इसको रिटर्न कर देना है। I think this is going to be the edge case. So जब मेरे पास ये चीज़ें चेक हो जाएं तो should be able to return max area. Let's see. फॉर्मेट कर देते हैं। So, तो खैर यही कोड है। बाहर इसको सबमिशन में जाके रिस्टोर कर लेते हैं, और ये सोल्यूशन मेरा एक्सेप्ट हो चुका है एक मरतबा।
Accepted. एनीवेज ये कोड मैं पेस्ट कर दूंगा, हमारे पास सिर्फ 2 मिनट ही रह गए हैं, तो अगर इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है तो काइंडली, हाँ, बट yeah, I've taken a good 1 hour to solve this. जी सर, over to you. ओके, किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछते हैं, अदरवाइज हम सेशन